क्या हाल है दोस्तों आप लोगों का। वेलकम भाई। बहुत ज़बरदस्त मैचेस हुए yesterday. Germany took on Ivory Coast. Then we saw Japan destroying Tunisia. Talking about destroying, that same thing what Netherlands has done to Sweden, or Ecuador or Curacao got disappointing draw. We're gonna talk all about it, right? So let's jump into it and try to understand. Let's start with Germany and Ivory Coast. Ecuadorians, Ivory Coast fans. Let me tell you right away. Simple thing is that don't need to get disappointed. I know you guys lost the point, but that being said, you guys played exceptionally well. Germany had to play outside of the skin to beat you guys. So you have a scary team, and I have no doubt you will have a deep run in the tournament for sure. That being said, Germany survived a huge scare. Ivory Coast provided, with that early goal by Frank Casey. Uh, but honestly, that was a lot of work done by Diomande. बहुत बेहतरीन dribble pass करके गया, and keeper spilled it, and Casey was there to convert that, and that was brilliant until unless that equalizer came by Undav. But that being said, see, Ivory Coast had simple plan. They did not sit back. They were pressing Germany aggressively. That was throwing Germany off उनके गेम से, क्योंकि वो तो भाई अटैकिंग स्पेस उन लोगों के फुल बैक को अटैक कर रही थी जर्मनी की। अगर आप लोग नोटिस करें तो मैच में जाके जर्मनी की फुल बैक्स को अटैक कर रहे थे, उन लोगों को सेटल होने नहीं दे रहे थे। और फिजिकल मिडफील्ड तो है जिन लोगों की, दैट वाज कॉजिंग प्रॉब्लम्स टू जर्मनी, उन लोगों को सेट होने देने नहीं। बट द की थिंग वाज, I it was tales of two half. First half, brilliant resilience showed by Ivory Coast, who are no pushovers. They are 2023 AFCON winners, if you know, who sacked their manager after one or two games in that tournament, if you remember. And that being said, um, Germany struggled because they were very uh, slow in terms of progressing the ball. Attackers were getting isolated, कुछ चांस नहीं मिल रहा, और आइवरी कोस्ट की डिफेंस बहुत कॉम्पैक्ट डिफेंड कर रही थी भाई। एंड देन देयर वाज अ फ्रैंक केसी गोल दैट शोड व्हाट एग्जैक्टली आइवरी कोस्ट वांटेड। वो लोग बॉल विन करे, सेकंड बॉल विन करे, ट्रांजेक्शंस में क्विक थे, एंड दे वर हर्टिंग जर्मनी। But that being said, Nagelsmann, being the youngest manager in the tournament, right? उन्हें क्या करा कि he started realizing something, okay? कि Germany needs more directness in the attack. They need some good presence in the up top of the park. So उन्हें क्या चेंजेस क्या करा, तो मोर मूवमेंट का अटैक्स चेंज करा, एग्रेसिव हुए, फिर फ्रेश लेग्स डाला, उन्हें नए बंदों को लाया। बिगेस्ट डिसीजन वाज ब्रिंगिंग डेनिस उंडाफ एंड अमीरी। अरे क्या पास था यार अमीरी का, वो पिच परफेक्ट पास एंड गुड गोल बाय डेनिस उंडाफ एंड इक्वलाइज। एक वक्त इक्वलाइज हो गया तो ये नहीं कि अब जर्मनी वाज अटैकिंग, आइवरी कोस्ट वाज सिटिंग बैक। नो 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 नो, एक आइवरी कोस्ट को एक चांस भी मिला था। वो बंदा यार, ही टुक 1 or 2 टच एक्स्ट्रा, उतने में आके जर्मनी की डिफेंस क्लियर कर गई थी। बट या, it was a good game. And second goal came by Dennis Undav in 90 plus minutes. Aggressive थे वो लोग, they were going at it, and they won the match. ये same चीज Ivory Coast को भी बोल सकते थे, if if the strikers were little bit more clinical for Ivory Coast. But key players definitely Dennis Undav, सुपर सब के वैसा आया, जर्मन के अटैकिंग एनर्जी को चेंज ही करके रख दिया। एंड फ्रैंक केसी लेड लाइक अ ट्रू लीडर विद अ गोल। देन जब आइवरी कोस्ट की वो नंबर 5 बंदे की इंजरी हुई, नाम भूल रहा हूँ यार उसका, जब जाके थोड़ा स्पेसेस खुलना स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज ही इज अ इम्पोर्टेंट प्लेयर। एंड Musiala, especially in the first half, was getting physically bullied by Ivory Coast defenders. वो तो भाई वो टेक्निकल प्लेयर है, उसको स्पेस ही नहीं देते, उसको रफ रफ दखल दे रहे थे। एंड दे वे ब्लॉकिंग पासिंग चैनल्स फॉर फ्लोरियन वर्ड्स। बट end of the day,
Germany advanced to knockout stages after two World Cups. After 2018 debacle, after 2022 debacle, they finally progressed to round of 32, and let's see who are the potential opponents. Talking about opponents, let's talk about Netherlands and Sweden. 5-1 win. अरे बहुत प्यारा खेली यार ये. There's a famous statistician who predicted Netherlands winning this tournament, and that guy is had his six predictions right. And there's another, and he's not an astrology or astrologist or something. He's proper mathematician who do a lot of statistics algorithm work. He's been right from past six World Cup. There's another scholar who proper do, I mean, who look at the stars and do all the क्या बोलते, सो एक अनऑफिशियल पंडित के वैसा है वो. तो वो बंदा भी अपने पांच वर्ल्ड कप के प्रेडिक्शन सही दिया. वो बंदा इंग्लैंड बोल रहा है, तो इंटरेस्टिंग. एंड आई सॉ नेदरलैंड हैड फ्लुएंसी. देखो इनकी मिडफील्ड डिफेंस का पास तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, राइट. इनकी अटैक के ऊपर क्वेश्चन था. कोडी गैप को भाई, क्या नाम है, इनका नंबर 11, नेदरलैंड का नाम भूल, आयन रॉबिन डेनिस बर्कहैम के गोल टैली कर दिया उन्हें. दैट्स नो जोक. दैट टू नेम, राइट. बट या, बट कुमन, नेदरलैंड क्यों नहीं जीत सकती, नेदरलैंड में क्यों डाउट बोले थे. कुमन का नाम आया तो मैं टर्न ऑफ हो जाता हूँ कि भाई ये बहुत प्रॉब्लमेटिक मैनेजर है. इसका अप्रोच है कि मेरे को लूज नहीं करना है. इसका अप्रोच ये नहीं कि मेरे को जीतना है बोल के. बट एनीवेज ही सेटअप यूजिंग 4-3-3 विद आइडिया वाज दैट वाइड से अटैक करेंगे और स्वीडन की डिफेंस को स्ट्रेच करेंगे, बिकॉज स्वीडन के पास अटैकिंग फोर्स अच्छा था. ग्रेगोरस ले लो, और अयारी ले लो, और क्या नाम है अपना माय बॉय आइजैक ले लो. एंड द मिस्टेक व्हाट मैनेजर डिड इज दैट ग्रैम पॉटर कि हाफ टाइम के बाद ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एलेंगा को ला देना था. गुड गोल बाय एलेंगा. बट यस, नेदरलैंड वाज वेरी, ट्रांजिशन में बहुत स्पीड थे, कांस्टेंट मूवमेंट्स अच्छे थे, प्रेस कर रहे थे अच्छा बॉल को. एंड भाई समरविल भाई, what a player he is. He will get a big money move for sure from West Ham. He will get a big money move. अरे भाई लिवरपूल वाले ले लो यार. And good thing is that Liverpool put an official bid for Jan Limomande for a potential Mohamed Salah replacement who can play on both the wings. But Leipzig के पास right wing ज़्यादा खेलता है वो. But yeah, I mean, if you want to put him on left and bring someone like समरविल, राइट, बहुत अच्छा अटैक बन था यार. बट या, अटैक अच्छा था नेदरलैंड का, डिसिप्लिन थे लोग के. स्विट्जरलैंड ऐसा नहीं कि वन साइडेड हार गया, स्कोर लाइन वो सजेस्ट करती है. एंड बिफोर आई गो एंड टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट स्विट्जरलैंड, लेट मी टॉक अबाउट द स्टार बॉय ऑफ द गेम, ब्रायन ब्रॉबली. ब्रायन अच्छा फिजिकल प्रेजेंस अच्छा था, दो गोल मारा उन्हें. गोडी कैप को भी अच्छा फिनिश करा. एंड डच की डिफेंस भाई जो टेम्पो कंट्रोल कर रही थी, इट वाज ग्रेट. एंड टॉकिंग अबाउट स्वीडन, ये नहीं, फर्स्ट हाफ में तो बहुत करीब आ रहे थे गोल के. एंड दे विल टेस्टिंग द नेदरलैंड कीपर को ऐसा ऑफ डे नहीं था. ही वाज गेटिंग टेस्टेड नाउ एंड देन. बट थॉट प्रोसेस सिंपल था सेकेंड हाफ के बाद. बोथ द मैनेजर्स का, एक मैनेजर का ये था कि लेट्स डू डैमेज कंट्रोल, दूसरा मैनेजर का ये था कि चलो अब ट्रांजिशन फाइट करेंगे, वाइट से ओवरलोड करेंगे, बिकॉज उन लोगों को गोल डिफरेंस होना है. जापान और उन लोगों का ड्रॉ हुआ था, राइट. तो 5-1 was the score that they end up being, and Netherlands moved onto a strong position in Group F. Talking about strong position, भाई जापान भी कहाँ पीछे बैठती. अब मसला ये है, जापान एंड नेदरलैंड आर equal in the group, along with the goal differences as well. Brilliant game by Japan, bhai. Japan shows why they are the most dangerous side from Asia. और हमेशा मुझे एक सवाल था भाई, एशिया के है तुम, एशियन चैंपियंस तो बच्चों के वास्ते जीतना चाहिए. बीइंग जापान, आई डोंट
I get surprised seeing क्या बोलते so Qatar being Asian champion. No doubt Qatar is played good. They got battered by Canada in last match, but भाई आप जापान है, आप you have to be the crown king of Asia all the time. बट जापान का सबसे अच्छी चीज़ है, आप क्या प्यारे क्विक पासिंग करे रे। प्रेसिंग तो भाई टूनिशिया को तो ये करके रख दिए थे, थका के रख दिए थे। और टूनिशिया का जो नया मैनेजर था, ये वही मैनेजर है 2022 में जो सऊदी को मैनेज करा था, जो हराया था अर्जेंटीना को। बट या हार्ड लक, नथिंग मच दे कुड डू। And Japan attack अच्छा करी. They had good control over the midfield, and they won. Tunisia is officially out of this tournament, and I have great hopes by Japan. अगर potentially Japan second finish करी भाई, उन लोगों का round of 32 या maybe round of 16 ब्राजील से पड़ सकता है भाई। सेम गोज विद जर्मनी, दे राउंड ऑफ 32 में फ्रांस फ्रांस मिलने वाला, 16 में फ्रांस वगैरह मिलने वाली है लोग। सो high voltage action going to start right away from in round of 16. Let's see how things will turn up, right? But yeah, one small thought on Japan's manager. अरे भाई वो बंदा ना ऐसा कार्डबोर्ड पे ऐसे यूं यूं ड्राइंग का लिख रहा नंबर्स 3 4, तो प्लेयर्स को सिग्नल दे रहा कि वो लोग स्विच कर रहे हो, लोग गोरा मार रहे हो भाई बेहतरीन तरीके से। बट या जापान, आई नेवर स्लेप्ट ऑन देम। they are the Asian giants, and they will definitely go deep into tournament. And I can't say अगर ब्राजील वेजील फ्रांस अर्जेंटीना टाइप के ऐसे मिल गए, इंग्लैंड मिल गई, स्पेन मिल गई, तो क्या होता उन लोगों का। बट इफ दे गेट लिटिल फेवरेबल ड्रॉ, व्हाई नॉट क्वार्टर फाइनल्स ब्रो, व्हाई नॉट। टॉकिंग अबाउट, लेट मी टॉक अबाउट ये वर्ल्ड कप में स्कैम क्या चल रहा है। स्कैम का नाम है एक्वाडोर। कई को भाई एक्वाडोर, एक्वाडोर हैव सेकंड खत्म करी है साउथ अमेरिकन के क्वालिफाइंग ग्रुप में, सेकंड बिलो टू अर्जेंटीना। स्कैम है भाई। दो दो मैचेस तो ड्रॉ कर लिए, एक मैच तो हार गए, दूसरा मैच केप वर्दे से के कुरेसाओ से ड्रॉ कर लिए भाई। कुछ भी नहीं था, या इनर वेलेंसिया को मालूम कि भाई मेरे पास ज़्यादा अटैकिंग स्ट्रेंथ नहीं है, तो एक जो चांसेस स्टार्टिंग में मिल रहे थे उसको 10 मिनट के अंदर गेम के, टेक इट एंड फिनिश इट। तो एक गोल की लीड ले लो तो तुम्हारी डिफेंस तो है ही कुछ सी आउट कर लेने कि भाई एकदम घटिया घटिया गेम फ्रॉम एक्वाडोर, नॉट फ्रॉम कोरेसाओ। कुरेसाओ तो भाई चढ़ के अटैक करने की कोशिश कर रही है, एंड दे केम 1 or 2 times or more than that close to score as well. But Ecuador, of course, we don't associate Ecuador to have more possession, but in this match they had good possession. कोरेजा शोट की एक ऑर्गेनाइजेशन आप अच्छा रखे, डिसिप्लिन अच्छा रखे आपकी बैकलाइन में, तो फाइट बैक दे सकते कोई भी टीम को। बट या टेक्निकली एक्वाडोर डिफेंस, अरे भाई तुम कोरेसाओ के साथ डिफेंसिवली शेप कई को बैठते, व्हाई डू यू वांट टू सिट। दिस इज टाइम फॉर यू टू टेस्ट योर स्ट्राइकर्स आउट, राइट, योर विंगर्स आउट, योर फ्रंट लाइन आउट, कि जाओ अटैक 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 करो। नहीं, ट्रांजिशन क्विक कर रहे, फिजिकल मिडफील्ड में कोरेसाओ खाली पार्टिसिपेंट का बैच लेने आई क्या, वो भी ट्राई कर रही कि उल्ला स्टे उल्ला दे वर लाइक भाई हमारे मौका मिलता है हम काउंटर अटैक में मारते हैं, दे केम क्लोज अ कपल ऑफ टाइम। अब क्या है मसला कि अब एक्वाडोर गोना फेस, आई थिंक एक्वाडोर गोना फेस हु, लेट मी चेक who Ecuador gonna face. I'm checking the standing one, right? Ecuador, where is Ecuador? Ecuador, Brazil, Ecuador. Yes. Now Ecuador last matches with Germany. Up Curacao last matches with Ivory Coast. अब मसला एक्वाडोर के लिए फायदेमंद ये हुआ कि दे लॉस्ट टू आइवरी कोस्ट विथ ओनली 1 गोल डिफरेंस, तो थर्ड पोजीशन पे है, 2 मैच हार के और ड्रॉ के। और इनला भी एक मैच हार एक बार ड्रॉ करे कुरेसाओ, लेकिन उन लोगों की 6 गोल डिफरेंस है जर्मनी के मैच से। तो अगर जर्मनी चढ़ के मारी इक्वाडोर को, तो कुरेसाओ दैट विल बी अ टर्की वैसा सरप्राइज हो जाएगा मुझे ये तो। बट सीरियसली मैन, let's see how things will turn up, and
इट वाज ग्रेट गेम्स. मुझे तो बहुत मजा आया. करंटली आई एम वाचिंग बेल्जियम वर्सेस ईरान. आई मुझे पता नहीं यार बेल्जियम को हो क्या गया. ईरान इज प्लेइंग मच बेटर. खैर we'll talk about that little bit more when we get chance, but yes, thank you guys. See you on next video for from today's matches breakdown.